Hi everyone, I am Shweta and I welcome you to my channel Quest English Corner. I am a teacher by profession and by the means of my channel Quest English Corner, I will be sharing some rules of grammar. I'll start from basic and I will conclude to advanced. I'll cover all the topics step by step. So if you like my content, if you like my video and you find them useful, do like, share and subscribe my channel, and please leave a comment in the comment section regarding your reviews about my channel. So as this is a first class, so the rule number 1 that I am going to share with you guys is this and that. This is used for things that are near to us. नियर टू अस मीन्स वो चीज़ें जो हमारे पास हैं, जिन्हें यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हमें उठ के नहीं जाना पड़ता. इफ़ आई से कि अगर मेरे पास ये देखिए मेरे पास एक पेन है, तो आई विल से दिस इज़ अ पेन. क्यों? मैं बिल्कुल नहीं हिली इसको उठाने के लिए, तो दिस इज़ अ पेन, ये मेरे बिल्कुल पास थी. और अगर हम बात करेंगे दैट की, तो दैट उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है जो हमसे दूर है, जिन्हें यूज़ करने के लिए या जिन्हें उठाने के लिए हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा. उन चीज़ों के लिए हम दैट यूज़ करते हैं. जैसे कि दैट इज़ अ ट्री. ठीक है, अगर हमारे सामने कोई ट्री है और हमें किसी को बताना है कि वो एक उसको ट्री कहते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज़ अ ट्री. ओके, आई होप माई कंसेप्ट इज़ क्लियर विद यू. आई विल प्रोवाइड यू some more examples like this is a specs. Okay, that is a ball. If somebody is standing there and you are saying that is Arjun, कि वो जो लड़का खड़ा है उसका नाम अर्जुन है. If someone is standing near to you, you are introducing someone to some other people, तो आप बोलोगे this is my friend, this is my friend. And someone is standing far, then you will say that is my friend. Okay, I hope you find this information useful for yourself, and please follow me on my Instagram channel and Facebook channel. You will find the information there very useful. Thank you. Love you all.